In this module, where we are discussing about the process of social casework, under this topic, we are discussing the methods of social treatment, and there are two methods of social treatment. One is the direct method of treatment. In direct method of treatment, we talk about, first of all, the counseling. Counseling can be provided in the marriage institution, in selection of the occupation, within the family, with the school. So now we will see how this direct treatment method is used in social casework. When we look at the counseling can be provided to the couples. बहुत सारे केसेस में इस तरह से होता है कि अगर कोई फैमिली में जो कि कोई one of the person who are in the marital relationship as a client can come to the caseworker, or maybe as a couple they can come to the caseworker for seeking advice for the solution and for the resolution of the marital conflict. तो उसमें काउंसलिंग प्रोवाइड की जा सकती है. केस वर्कर जो है वो एज अ क्लाइंट उनको लेते हुए उनके साथ काउंसलिंग सेशन कर सकता है. और बाज़ औक़ात जो वन और द टू पर्सन्स जो उनके पास आए हैं केस वर्कर के पास, वो किसी ऐसी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं कि जिसको महज कम्युनिकेशन के ज़रिए, महज डायलॉग के ज़रिए उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है. बहुत सारे सिचुएशंस में इस तरह से होता है कि लाइक यूनिवर्सिटीज़ में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर स्टूडेंट्स the student as a client can come to the caseworker for seeking advice in the selection of the subjects, so they can get the good jobs in the market in the coming future. So the caseworker जो है वो उनको गाइड कर सकता है कि आप इस तरह के सब्जेक्ट्स लेंगे in this changing globalized world, तो आपकी जो कल को जो मार्केट नीड्स हैं वो उसके मुताबिक आप जॉब आसानी से हासिल कर सकते हैं. इन सर्टन केसेस ये होता है कि जो क्लाइंट है वो आफ्टर हैविंग डिग्री, आफ्टर एक्वायरिंग डिग्री, उनको नहीं पता होता कि किस तरह की जॉब में जाना है. उसके लिए वो प्रोफेशनल काउंसलिंग एंड ऑक्यूपेशनल काउंसलिंग जो है वो केस वर्कर प्रोवाइड कर सकता है स्टूडेंट्स को एज अ क्लाइंट. बहुत सारी सिचुएशन में, जैसे कि फैमिली के अंदर बाज़ औक़ात बच्चों के दरमियान, डिफरेंट सिबलिंग्स के दरमियान, पेरेंट्स के बीच में, या ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन यूनिक एक्सपीरियंसेस ऑफ देयर लाइफ के मदर की डेथ हो गई है, स्टेप मदर आ गई है घर में, तो लॉट ऑफ फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिसकी बेस पे जो केस वर्कर है वो किसी भी फैमिली मेम्बर को, एल्डरली, यंगर या बच्चों और पेरेंट्स के बीच में एक काउंसलर का जो रोल है वो परफॉर्म कर सकता है. इसी तरह से in the domain of school social work, which is an important field of social work practice and an important in which the casework practice is being provided, उसमें भी ये होता है कि बाज़ औक़ात जो स्टूडेंट है उसका स्टडीज़ के हवाले से कोई प्रॉब्लम है, उसकी स्लो लर्निंग है, टीचर के साथ कोई प्रॉब्लम है, या स्कूल मैनेजमेंट के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो वो जो केस वर्कर है वो उस प्रॉब्लम को काउंसलिंग के ज़रिए रिजॉल्व कर सकता है और उसकी जो लर्निंग है उसको एनहांस कर सकता है, स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है, एजुकेशनल परफॉर्मेंस, उसको इंक्रीज कर सकता है. अनदर इम्पॉर्टेंट type of direct treatment in the method of social casework is therapeutic interviewing, in which family and marital therapeutic intervention is provided to the different clients. And then another important direct treatment is the clarification. Sometimes जब clients किसी भी फॉर्म में, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम के साथ जब केस वर्कर के पास आते हैं तो ओवरवेल्म्ड होते हैं, डोमिनेटेड होते हैं some sort of emotional problems, और बाज़ औक़ात वो अपनी सेंसिटिविटी की वजह से, जैसे कि अभी हमने पहले बात की थी कि जो पर्सनालिटी टाइप है वो जानना बहुत ज़रूरी है केस वर्कर के लिए.
तो उनके पार्ट पर उनकी सिचुएशन को क्लियर करना और एक क्लैरिफिकेशन के साथ उनको पूरी सिचुएशन और प्रॉब्लम को बताना, दिस इज an important type of direct treatment in the process of social casework. Then it is important skill and technique on the part of the caseworker that a caseworker should have the ability to how to interpret the behavior of the other people, how to interpret the behavior of the client, and how to make the client to learn how to interpret the behavior of the other people who are attached and who are in relationship with the client. तो जब ये इंसाइट हम क्लाइंट के अंदर डेवलप कर देते हैं तो बहुत सारे जो बिहेवियर्स उसके लिए इरिटेटिंग होते हैं, उसके लिए इमोशनल ट्रॉमा का बाइस बनते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का बाइस बनते हैं, तो वो जब उन बिहेवियर्स को इंटरप्रेट करना सीख लेता है तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो वैसे ही रिजॉल्व हो जाती हैं और उसके पार्ट पर एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है. क्लाइंट की पर्सनालिटी जो है वो मज़ीद पेशेंस एंड टॉलरेंस के साथ अपने जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको फेस करना और बियर करना शुरू कर देते हैं. Then in direct treatment, the caseworker also tries to provide the psychological support with discussion, with dialogue, with counseling, and using the therapeutic interventions, and while through resource utilization. First of all, this resource utilization of the potentials, the reservoirs of the potential, the reservoirs of the talent which are present in the client inside, in the personality of the client. So this is important कि पहले जो है वो सेल्फ अवेयरनेस दी जाए क्लाइंट को कि किस तरह के वो इनर रिसोर्स अपने अंदर रखता है, टैलेंट और पोटेंशियल, हिडन पोटेंशियल्स रखता है कि जिसको अगर वो यूज करे तो अपने प्रॉब्लम्स और इश्यूज को रिजॉल्व कर सकता है. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट because in social work practice we are concerned with the environment and we try to explore the social factors as well. So a caseworker tries to bring a positive, healthy environmental modification, which is very important because individuals influence the environment and are influenced by the environment as well. And it is a fundamental belief in the practice of social casework that individuals affect the social forces which are existing in the social environment, in the human environment, in the societal environment, and are affected by the social forces. So this is a reciprocate manner. Then the fifth phase is very important in the process of social casework, which is about the monitoring and evaluation. Monitoring provides the crucial feedback to the caseworker and the client regarding a lot of things, whether the treatment program is succeeding as desired, according to the desirable goals and objectives of the relief program or not. And very important is this, that whether the modification in the program are needed or not, कि जो प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है क्लाइंट को रिलीफ देने के लिए जो एफर्ट्स अब तक की गई हैं वो अब तक कामयाब हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, और जो ऑब्जेक्टिव जो सेट किया गया था जिसके लिए वो इनिशिएटिव्स लिए गए थे ट्रीटमेंट के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली any kind of change, any kind of modification is needed in the environment or not. So this is important in the monitoring phase to see, and this is an important feedback. And it is also important to know, it is also important to analyze for the caseworker in the phase of the monitoring and evaluation that whether the client is being helped in real sense or not, for which all the efforts have been made. And then the last but not the least is important, the follow-up and the termination. So the worker should discuss the
original as well as revised goals and objectives. It is important कि क्लाइंट को कॉन्फिडेंस लेना चाहिए केस वर्कर को, और उसको जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उस हेल्पिंग प्रोसेस के वो एक्सप्लेन करने चाहिए. एंड नंबर 2, अगर उन ऑब्जेक्टिव्स में कुछ चेंजेस लाई गई हैं, कुछ मॉडिफिकेशन की गई है, तो वो भी उसको बताना, उसको कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है. एंड नंबर 2 के अचीवमेंट्स ड्यूरिंग द हेल्पिंग पीरियड, अब तक क्या गोल्स, क्या अचीवमेंट्स हम हासिल कर पाए हैं और कौन से जो हैं वो लेफ्ट बिहाइंड हैं. एंड अदर इम्पॉर्टेंट इज द फैक्टर्स हेल्पफुल और ऑब्स्ट्रक्टिव इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स. कौन से फैक्टर्स अभी तक हमारे लिए हेल्पफुल रहे हैं और कौन से फैक्टर्स जो हैं उन्होंने एक बैरियर क्रिएट किया है इस हेल्पिंग प्रोसेस में, और व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट्स विच आर नीडेड टू मेंटेन द लेवल ऑफ अचीवमेंट, और अब तक किन एफर्ट्स की हमें ज़रूरत है और किस तरह की एफर्ट्स को अभी तक हमें एग्जीक्यूट करना है, so we can accomplish the whole objectives. And then what kind of feelings, because now the process of social casework is at the final stage of termination. So what kind of the feelings aroused by disengagement? So this is important to tell the client, to discuss with the client that now the process will be terminated because of certain reasons, but it should be based on a very clear communication and the healthy communication with the client. And this termination in the process of social casework should not be done on abrupt basis. Then it is important to know that the frequency and amount of contacts should be gradually decreased. How many meetings should be decreased? If there are 4 meetings within a week, then there should be maybe the 2 meetings or the 1 meeting, or simultaneously it can be decided within the month. But this process of termination should be on slow basis. So the client cannot face a psychological trauma. And termination of the helping process brings up in both the caseworker and the client many feelings, both positive and negative, which must be verbalized clearly, and the caseworker must discuss these feelings with the client openly. And there must be a regular follow-up, a continuous follow-up, which can help the client to maintain the improvement, and which can give a confidence to the caseworker that the objective of the whole process of social work has been achieved or not.